जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। Please write down the heading. Effect of the registration of document. Effect of the registration of document. Effect of the registration of document. Effect of the registration of the document. Now please write down. Bracket में लिखिए section 47, section 47, section 47. As per this section, as per this section, as per this section, as per this section, every registered document, as per this section, every registered document shall operate from the time, shall operate from the time, shall operate from the time when the said document, when the said document is duly executed, when the said document is duly executed, comma, and not from the time, and not from the time, and not from the time of its registration, and not from the time of this registration, and not from the time of its registration. Change the para, full stop. Therefore, the owner of the property, the owner of the property cannot, the owner of the property cannot further retransfer that property, cannot further retransfer that property to any third party, merely because the buyer does not have the RTI over the property, the buyer does not have the RTI over the property, till that document has been duly registered, till that document has been duly registered. Full stop. As per section 23, of this act, it gives time to the buyer, to get the property registered, within 4 months, to get the property registered within 4 months from the date of execution, within 4 months from the date of execution of the document, and during that period, the owner does not have any right over that property, Full stop. Change the para.
section 47 talks about the retrospective applicability of registration, the retrospective applicability of registration, retrospective applicability of registration. Now अब इस judgment का नाम लिखिएगा, write down the name of this judgment. Write down the honorable court, yeah, the Supreme Court held that the registered sale deed operates from the date of execution, when entire consideration is paid, that is execution of sale deed, and not from the time of registration, not from the time of its registration. Now next heading, evidentiary value of registered document. Evidentiary value of registered document, ब्रैकेट में लिखेगा सेक्शन 48 and 50, इसमें लिखिए every registered document will be admissible before the registrar or the court, against any unregistered document or any oral agreement, तो छोटा सा सेक्शन था, ठीक है. दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. अब जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं देखता हूं कोई और केस लॉ हो अगर इसमें. चलिए ठीक है. अब नाउ वी हैव 2 minutes. मैं कल का आपको बता दूं फ्रॉम टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड व्हाट केस लॉज वी विल डिस्कस टुमारो. देखिए इन द टुमारोज क्लास हम लोग क्या डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर इफ द डॉक्यूमेंट इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, बहुत जरूरी था रजिस्ट्रेशन, मतलब सेक्शन 17 में फॉल कर रहा था, क्योंकि 18 में तो ऑप्शनल है, 18 में आपके ऊपर है, कराना ही कराओ, नहीं कराना मत कराओ. बट एज फार एज सेक्शन 17 इज कंसर्न, जहां पे डॉक्यूमेंट इज वेरी मच मैंडेटरी टू गेट इट रजिस्टर्ड, वहां अगर आपने नहीं कराया, व्हाट वुड बी इट्स consequences. There
आफ्टर वी विल डिस्कस द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक सर्टिफिकेट मिलता है जब भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ, अगर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देता है रजिस्टर्ड करने के लिए, देन व्हाट विल बी द रेमेडी। क्या रेमेडी बचती है पार्टी के पास, पार्टी के पास क्या रेमेडी बचती है, ये हम लोग देखेंगे। अभी तक आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस करा? रिगार्डिंग द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब से वो वैलिड होगा, कब से उसका एग्जीक्यूशन माना जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग। उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? उसके पहले हम लोगों ने देखा विल के रिगार्डिंग केस लॉज भी देखे और डिस्कशन भी हुआ। उससे पहले भी हमने सेक्शन 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, 23 पढ़ा, जहां पे 4 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाँ, अगर कोई पर्सन कोर्ट नहीं, सॉरी, रजिस्ट्रार के पास नहीं आ पा रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट कैसे रजिस्टर होंगे, एंड हु आर द पर्सन हु आर इम्यून, हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट। दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, ये हम लोग का डिस्कशन हुआ है। ठीक है, चलिए लेट्स वाइंड अप द क्लास एंड लेट्स मीट टुमारो विद द फर्दर डिस्कशन। चलिए, थैंक यू। Subscribe for more content.